Professor Dr. Pankaj Madan. Dr. Pankaj Mehta is a multidisciplinary academician with degrees in production engineering, management, web technology, and quality management. He is CMI Level 5 certified academic leader, and his areas of interest are decision science and digital business. Presently, he is Dean Faculty of Engineering and is former Dean of Faculty of Management and Faculty of Education at Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar. Before turning to academia, Dr. Madan has also worked with two reputed engineering companies for 4 years. Dr. Madan was director at College of Engineering, Roorkee during 2009 and 10. In the past, Dr. Madan had taught at University of Southern Queensland in Dubai and has been visiting professor at Shaoxing University, China, and the other famous B school in Southern America, Centrum University of Peru, and also University of Tartu in Estonia, Europe. He is also listed as premium educator with Harvard Business School Publishing, Boston. He is award winner, B School Excellence Award in Best Teacher of Operation Management category. If I talk about his publications and all, Dr. Madan created an MHRD e-Pathshala course on quantitative techniques in 2016, and he has been already authored 12 books, supervised 15 PhD scholars, and one of his books also got listed among bestseller of India Today Book Club. He has conducted more than 500 workshops, and he is associated with 15 universities nationally and internationally. Sir is proud member of AOM and CSI and is having professional link with many corporate bodies. So I think in short, I can say that you are a star in Galaxy. And now I would request you to enlighten us, sir, and give us your views in regards to classroom management. Thank you, sir. Over to you. Thank you, Dr. Jasmeet Kaur. And I thank Dr. Kavita Arora and the organizing team for inviting me for this session on effective teaching. This session, I wish, am I audible? Yes, sir, you are. Okay, wonderful. I think this session will be a little bit different than other sessions in the sense that since it's a session which is very, very challenging, classroom management, and classroom management, we all know, is something we think that we all know, but there is an art and craft for managing the class. And let me share with you that I have learned this technique, which I am going to share with you at Harvard Business School in US, and then practiced this technique in 6 different countries, including UAE, China, Europe, Latin America, and different universities there. So whatever my experience is, it's the first time that I'm interacting with you. Maybe a few of the participants maybe who have attended my workshops previously, but I wish that it is always a new start. So I have circulated one of the small case about Assistant Professor Joe. And I have insisted Dr. Kavita that she should ask all the participants to come read in the class, means in this session, because I will be asking so many questions, and we will be creating demo teachers here. Although you are all are teachers, but still we'll be wearing, sometimes we'll be wearing the hat of a teacher, and sometimes we'll be wearing the hat of a student here, right? Now, anticipating that most of you have read this article which I have given to you, I'll be inviting one by one few people
here in this session, and they have to speak out, and they have to answer my questions. And before that, I have given few questions also. So to Dr. Kavita to pass on to the participants, and they must have done those questions also. So can I just within 1 or 2 minutes ask whomsoever I want that if they should probably come out and answer the questions which I have given in my assignments as an assignment. So we have Dr. Taruna Sharma with us. Dr. Taruna ji, can you answer the first question which I asked? Assistant Professor Joe is teaching which subject? She was a teacher in which program? Dr. Taruna Sharma, can you answer? Dr. Taruna, are you there? I'll ask the organizers to restrict the certificates of the participant who will not respond. If you are there, you know or you do not know, that is something different. But at least you have to respond. Sure, sir. We'll please take care of it. Dr. Taruna Sharma, are you there? I'm noting down the names. So we are checking out technical, if to the technical person that mics are on or not. Yes, Great, that's the issue. Sometimes Maninda ma'am, just check. A person can unmute. A person can easily unmute himself or herself and can speak. Ma'am, that is only possible when you will allow. Means the organizer. The ma'am has allowed. I think ma'am has done that. Okay. Permissions has been given, sir. Okay, that's wonderful. Dr. Taruna, we are waiting for your response. Dr. Taruna? Hello, am I audible, sir? Yeah. Yes. Sorry, sir, my mic was not working. No issue, ma'am. Now it is working. We are pleased to listen your sweet voice. Can you just tell me the answer of that? It was a very simple, only 2-page document was there. And if you want, I can give you 5-10 minutes to just make a review also. But Sure, because sir. by this session, I never go for teaching with a time constraint. That is my problem. So, but Taruna ji, I expect that you must have gone through this case, and it is very simple. So, Assistant Professor Joe is teaching which subject, according to you? क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही थी वो? Sorry, sir, I don't remember at the time, but अभी तो होगा ना आपके पास वो सामने, आपके WhatsApp पे होगा. Yes, sir. हाँ. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही थी? अच्छा, चलिए, करुणा जी को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको रिव्यू करने में. कौन जवाब देगा? रेज हैंड, या बता सकते हैं आप अपना स्पीकर ऑन करके. सर, इट्स प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. पहले नाम बताइए अपना. डॉक्टर कविता अरोड़ा. डॉक्टर कविता अरोड़ा, इट्स प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. ठीक बोला आंसर बिल्कुल डॉक्टर कविता ने. दैट she was teaching operations management or production and operations management, right? And or program, which program was it? मेरे को ना यहाँ से ये नहीं पता लग पा रहा कि बोल कौन रहा है, तो अगर आप अपना नाम बता के पहले बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. जी, कौन बोल रहा है? प्रोग्राम कौन सा है? Sir, I think so. It is an LMP company, and the course might be an MBA. I think so. From मीनाक्षी मैम. अच्छा, कौन सी है? बिल्कुल ठीक कहा आपने. प्रोग्राम कौन सा मैम? MBA. Yes, sir. है? MBA program. Very good. It's about the MBA program and the company is LMP. Yes, sir. Very true. This is Dr. Samita, sir. Doctor? Samita. Dr. Samita. ठीक है. Very nice. These are some of the questions which are very, very simple. Complicated questions पर हम बाद में आएंगे.
Who answered the first question asked by assistant professor Joe? मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, अगर वो नहीं देगा फिर देखते हैं, ठीक है? डॉक्टर सुगंधा सैनी है यहां पर. डॉक्टर सुगंधा, आर यू देयर? डॉक्टर सुगंधा. Who answered the first question asked by assistant professor Joe? Sir, myself, Dr. Kavita. डॉक्टर, या बताइए. Hello. Hello. हाँ जी बताइए. Sir, it's Brad Lancaster and he spoke about 7 to 8 minutes. मैम सारा क्वेश्चन आपने नहीं आंसर करना, जिससे मैं पूछ रहा हूं उन्हीं ने जवाब देना है. मैंने डॉक्टर सुगंधा सैनी से पूछा है. डॉक्टर सुगंधा, कैन यू आंसर माय क्वेश्चन? मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन बस शुरू की 2 लाइन पढ़ी थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे इसमें पढ़ा ही नहीं जा रहा, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है भरा हुआ. नहीं, 2 पेज का डॉक्यूमेंट है मैम, बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है. है. नो मैम, बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो भी पीडीएफ है, इजीली पढ़ा जाता है. एक्चुअली सिर्फ 2 सर पेज फोन का पे है. देख रही थी मैं. हाँ, Sir, फोन can पे I कह answer रहा the हूँ. question? हाँ जी. Sir, can I answer the question? Yeah, please, Dr. R. Nagathan. Yeah. It was by students, I believe. क्वेश्चंस है, बट Okay. May I, sir? Ravi Yeah, Mishra. please. Sir, Brand Lancaster, sir. Brand Lancaster was the student who gave the first answer. Okay. Correct. And let's move to what I am doing now. I am giving you 5 minutes. 5 minutes. I am just sharing my screen, and on my screen this case is there. I am giving you 5 to 7 minutes just to again go through the case, and then I'll start my session again, so that nobody can say that I have not read or it was not visible, right? I'll just give a break for 5 minutes. I'll come back, but till then I am sharing my screen and I am giving you 5 minutes. You can go through your mobile, means on your mobile also, and also on my screen also. It is given there. Is my screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So if my screen is visible, this is the case which I have given. And then I'll start my session again. And let me caution you that please don't feel humiliated or insulted if you are asked question and you are not able to answer. But that can be saved when you go through this document carefully. If you say that, sir, I have gone through, but I am not able to answer, then we can discuss upon that. But it should not be an excuse. None.
Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wonderful, wonderful then. And I wish you must have read the article now, by now, most of you. This FTP, they gave assignment yesterday. We have to go and come for this session as a today. Yes, sir. We have read, Anyhow, sir. still, if you Santosh was RC. Half a day leave. for that, I got disconnected. Sorry for that. So let me start the I think there's an internet issue in regards to Sir side. There are total 8 articles in this. There are total 8 paragraphs in this article, and I'll be selecting few people who will be, or you can volunteer also. So let's first see the volunteers. So I need 8 people. Can you just name 8 people you can name? What you have to do is you have to just explain what has happened in this paragraph with Assistant Professor Joe. You have to just read that paragraph, not here. You have already read it, and you have to explain in English or Hindi, whatever language you want, that what has actually happened in that paragraph, what is written in that paragraph. You need to speak out that. You have to narrate that. Who are the volunteers? Can you write in the chat box, please? Volunteers, can you write in the chat box? Ravi Mishra ji, will you do it? Yes, sir. Yes, sir. First para. So first is the Ravi Mishra. Okay, let me first note it down. First para, Ravi Mishra. Okay. Next. Second para. You see, if you don't volunteer, then I'll select. Dr. Jeet Singh, will you able to do it? Dr. Jeet Singh. Shall I write your name? Dr. Jeet Singh. Are you there? Dr. Jeet, are you there? Dr. Jeet. Maybe I can go to. I can explain the second paragraph. I'm Dr. Naganathan. Dr. Okay. Naganathan. Naganathan. Okay. Yes. Then para 3. Dr. Shefali Chima. Shall I write your name for paragraph 3? Dr. Shefali. Dr. Shefali. Dr. Shefali. Okay, anyone else who could volunteer for paragraph 3?
Sir, I'll do for paragraph 3. Okay. Dr. Jasmeet. Okay, paragraph 4. Dr. Vibhuti, would you be able to do? Dr. Vibhuti, Shivam Dubey. Dr. Vibhuti. For paragraph 4, any volunteer? Paragraph 4. Paragraph 4. Any volunteer? Ma'am Monica Duggal, would you be able to do paragraph 4? Monica Duggal. So if you allow, I might be able to do. Mr. Anand Chaudhary. Okay. Yes. Then fifth one, Rita Roy. Shivani Vashisht. मैम शिवानी वशिष्ठ, पैराग्राफ 5 पे थोड़ा प्रकाश डालेंगी मैम? शिवानी वशिष्ठ. रोमिता चक्रवर्ती. Okay, sir, I will do it. सौमिता. Yes, sir. ठीक है. Sixth one. Fifth है ना? डॉक्टर तनुजा. 6th one करेंगे आप? मैंने नाम लिख लिया आपका, डॉक्टर तनुजा. डॉक्टर तनुजा यादव. 7th पैराग्राफ. डॉक्टर कुलवीर का नाम लिख लें. ओके. 7th पैराग्राफ डॉक्टर कुलवीर सिंह राणा. और 8th पैराग्राफ करेंगे 8th. एनी वॉलंटियर फॉर 8th पैराग्राफ? डॉक्टर विभूति का नाम लिख लिया है. Okay, Ravi Mishra ji, can you start? What exactly is written in paragraph 1 and how what happened in paragraph 1? It's a normal class, and the assistant professor has given a case study to the students, and half of the time have been already been spent of the class, and she is in a view of class that this class is much difficult to instruct, and they are not normal than those other classes. So she is wondering whether they are able to understand this and will put this case in what she is expecting from the class. So is somewhat disappointed in the class and started with the same thought of disappointment, I believe. Okay, and so what Raviji, what exactly was Joe trying to find out? What do you mean by careful redesign about potentially reducing time material spent in transit between departments? Yes, she has given a case study of a LMP company that workflow has to be designed so that it will minimize the cost of production in the assembly line. So that's the case study, that's the problem, and they have to resolve it through their operation subject. Wonderful, wonderful. I think that is my comment to you. Wonderful. You did very well. I should clap. Thank you, sir. Very nice. So this is very correct that she was really not happy about how her class was going on. She was expecting something else.
ये ट्रांजिट टाइम का मतलब ऐसा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट सपोज यू आर there are two different classrooms, like two different departments. Suppose in a college there are two different departments and they are very far away, and it takes a lot of time for teacher to commute from one department to other department, and most of the teachers they are moving from these two departments only. So the college can think that is it possible if these two departments can be brought together, they can be put nearby. I'm talking about a big college in which it takes few minutes to travel from one department to other department. So like that, this was the issue in a company in which workflow is there. जैसे सामान एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट पे जाता है, तो कैसे उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, that was the case about. और एक कंपनी है, उस कंपनी के बारे में एक केस था, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में केस जो था वो नहीं जा रहा था. एक केस मेथड जो है जिस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम क्लास मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट का या डिस्कशन का या नॉलेज डेसिपेशन का, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इन द वर्ल्ड. इट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट द होल वर्ल्ड कंसिडर इट लाइक दिस. एंड it is not that it is the commerce or business management, they are using this pedagogy. We have taken this pedagogy, this case method. जैसे कोर्ट में केसेस होते हैं तो उस केस पर कोर्ट के अंदर डिस्कशन होता है. तो देखिए, पढ़ने के दो तरीके हैं, दो तरीके से पढ़ाया जा सकता है. वन इज दैट यू ब्रिंग द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जिस भी संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, जैसे एनवायरमेंट साइंस की बात कर रहे हैं या साइंस की बात कर रहे हैं, whatever field you are talking about, you bring that specialist into the class and he can be the best teacher. The other way is that what even the government want and what best colleges or the universities in the world they are doing, they are asking teachers to collaborate with industry or to collaborate with the real-time environment and bring that environment in the class. Try to create that environment in the class with the help of a document. Document कौन लिखेगा? Document लिखेंगे आप. थोड़ा मेहनत का काम है, इसीलिए इसको one of the best pedagogies कहा जाता है. This is, but इसमें मेहनत बहुत है. So what you will write that document. ये जो का जो केस है, ये भी किसी ने लिखा है. ऐसे ही अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप विद वैदिक विजडम, जिसमें मैंने केस लिखा है बाबा रामदेव के ऊपर, बिकॉज सो मेनी पीपल दे आर क्यूरियस कि इन्होंने इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली, उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, क्या किया उन्होंने अपने अर्ली स्टेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप में क्या किया. तो अगर आप वो देखना चाहेंगे तो मेरा केस भी आप देख सकते हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है. ऐसे ही आपको कोई ना कोई आर्टिकल, केसेस न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा. और पब्लिश करने के बाद या तो किसी और का आर्टिकल या आप अपना आर्टिकल भी आप क्लास में इसको डिस्कशन के लिए ला सकते हैं. तो ये वर्ड में वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि नॉर्मल क्लास टीचिंग तो आप करते ही आ रहे हैं पीपीटी से या किस तरीके से, लेकिन एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल या केस स्टडी या कोई चैप्टर या कुछ किस तरीके से आपको क्लास में उसमें डिस्कशन इंडक्ट करना है, उस पर आज हमारी ये क्लास है. और इसमें हमने एग्जांपल लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर जो का. नाउ आई विल इनवाइट डॉक्टर नागनाथन टू स्पीक ऑन व्हाट हैपेंड इन पैराग्राफ 2. Yes, sir. May I, sir? Yeah, please. And the case is sorry, and the particular issue is taken into the classroom. And there was a discussion about 7 to 8 minutes, and he talked about the investment and the competitors, and also he's looking for the possible responses from the classroom regarding the LMP. But on the other hand, there's of course the people have to take in the particular thing in the classroom, but on the other hand, the people have no or not much interested, it seems, and they presented the idea what they think. On the other hand, Joe is it did not expect did not meet the expectation, I believe. So probably what she thinks,
she forced the people to look into that, and she was trying to collect the ideas from the students by force. And on the other hand, the students were also trying to identify the idea without having a complete involvement. That's what the second paragraph discusses, I believe. Very good, Dr. Naganathan. Very nice. Very nice. Yes. So he very well explained it. एक लड़का है ब्रांड लेस्टर, तो and he is the opener student. Opener student means the first student who responded to assistant professor Joe. And लेकिन उसमें गड़बड़ ये हो गई कि he was speaking about something else. मतलब जो assistant professor Joe थी, उसको चाहिए था somebody should talk about layout. प्लांट का जो लेआउट होता है अंदर से, जैसे मकान का एक लेआउट होता है, ऐसे प्लांट का मशीन फैक्ट्री का अंदर से लेआउट होता है, कौन सी मशीन कहां पर है और एक मटेरियल एक मशीन से दूसरे मशीन पर कैसे जाता है. बट वो जो ब्रैड लेस्टर था, उसने 7 से 8 मिनट ही टॉक्ड अबाउट कैपिटल एक्सपेंस, कॉर्पोरेट कंपटीशन एंड व्हाटसोएवर, बट ही डिडंट टॉक अबाउट द लेआउट्स. And that made the situation worst. Why? Because the other students, they picked up from Brand Leicester, and they were confused, and they were surprised, or they were not able to get what exactly assistant professor Joe was asking and what he was responding. उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बाकी बच्चों को, क्योंकि उसने एक जो फर्स्ट ओपनर होता है क्लास के अंदर, जो पहला बच्चा बोलता है, फिर सारा डिस्कशन उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है. दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है, इज द टाइम मैनेजमेंट, दैट यू हैव अ 30 minutes or a 45 minutes class. If somebody you are trying to initiate the discussion in the class by asking a question, but if the discussion drifts on, ये दूसरी तरफ चला जाता है अगर ये डिस्कशन, तो पूरा क्लास का टाइम वेस्ट हो जाता है. और जो रियली में आप करना चाहते हैं, you are not able to deliver or lead the class in the direction in which the teacher wants, or in which the assistant professor Joe actually really wanted. So let's move to Dr. Jasmeet. Dr. Jasmeet, ये third paragraph में क्या हुआ? Sir, I thought in my paragraph is fourth one. आपका fourth है, तो third किसका है? I'll just check, sir. Yeah, I thought so. Mine paragraph is fourth one. Who was going to speak about paragraph 3? चलिए कोई बात नहीं है, अगर paragraph 3 किसी का नहीं है तो कोई volunteer कर सकता है. Anybody who wants to volunteer for paragraph 3? Any volunteer for paragraph 3? देखिए 72 participants हैं. अगर आप volunteer नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ लगेगा. Please volunteer. Yeah. Sir, I can. Who is this? Dr. Kavita. Dr. Kavita. Dr. Kavita. Yes, okay. sir. ठीक है, बताइए मैम. So in this paragraph, it was what Joe was expecting in second paragraph, which he didn't get that answers, and the total case study went into some wrong direction. तो आवाज कम आ रही है आपकी मेरे को, थोड़ा सा तेज बोलिए. So whatever the expectations of Joe was from the class, it was not fulfilled, and the entire case study went into the wrong direction. So what she thought of, there was a boy called this thing, Tom Stabbins, who was the assistant plant manager. What was his name? Tom Stabbins, sir. He was the assistant plant manager from the manufacturing concern, and she asked him to come and tell something about everything, but the terminology he used was not clear to others also. That was the thing, I think. अब यही हुआ इसमें कि अब जब पहले वाले ने सही आंसर नहीं दिया, तो क्लास का जो एनर्जी थी लेवल, वो इंटरेस्ट था, वो लो लेवल पे चला गया. अब जो ने सोचा इसको अब कैसे, इसको क्लास को कैसे एनर्जाइज किया जाए, दोबारा से डिस्कशन लाया जाए, तो उसने एक और इस केस में इंटरेस्ट लाने के लिए उसने एक और स्टूडेंट को इनवाइट किया जिसका नाम था टॉम स्टेबिन्स,
और ये सोचते हुए टॉम स्टेबिंस एक ऐसा स्टूडेंट था, प्लीज कीप क्वाइट, पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स. Yeah. So Tom Stebbins was one of the students who had a industrial background. He was a working executive in a manufacturing company before coming to the MBA program. तो जिस प्रोग्राम में असिस्टेंट प्रोफेसर जो पढ़ा रही थी वो एक MBA का प्रोग्राम है. तो ये टॉम स्टेबिंस को उसने कहा अच्छा आप बताइए. अब उसने क्या है कि वो क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आया था तो उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उसका. लेकिन क्या हुआ, उसमें क्या है, उसने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए जिसका कि मीनिंग जो था वो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता था. अब क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा था तो वो भी अगेन उसका जो का जो एक्सपेरिमेंट था वो भी फेल हो गया. और वो क्योंकि वो सारे बच्चे जो टॉम स्टेबिंस ने जो भी वर्ड्स यूज किए होंगे, टर्मिनोलॉजी टेक्निकल वर्ड्स यूज किए होंगे, वो किसी को समझ में नहीं आया. अब फिर जो परेशान हो गई. ठीक है, अब तो जसमीत जी आप बताएंगी. I will. So what happened next was that Joe was still like he was thinking about kind of a thought that is. He was thinking. Yes, sir. Yeah. So he was thinking a kind of thought that his mind of general action of fighting against the authority kind of situation was there, because he thought ki either all are taking so much time, they have been anticipating, they were expecting something to happen last night, and maybe they might be ready for another strategy to come tomorrow. नहीं, आपने कौन सा पैराग्राफ का बता रही हैं? मैंने ये वाला पैराग्राफ बोला था आपको, ये वाला, ये है फोर्थ वन. Still Joe thought a general rebellion. That he was having a general kind of rebellion in his mind, sir. हाँ यही वाला. हाँ जी. Sir, that is what I'm telling, sir. Okay. And sir, maybe for that particular class he was having, because he thinks maybe they are unprepared. Why they are unprepared, that was coming in his mind was ki either they all have spent too much time last night anticipating or expecting something to happen or might be that they are preparing some strategies, or they had lot of preparations or things for the first year. So there were so many things. There was a foolishness which was being building in his mind in several weeks, sir. Okay, very nice. जसमीत जी, थोड़ा सा इसमें माइनर एक छोटा सा करेक्शन है. ये स्ट्रेटेजी का क्या है? स्ट्रेटेजी एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है, तो उसका मिड टर्म टेस्ट था अगले दिन. हाँ जी. मतलब जिस दिन वो क्लास में डिस्कशन करना चाह रही थी, मतलब जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं जी सर, उस दिन क्या था, एक स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का एक मिड टर्म का टेस्ट भी था. जी सर. बस कुछ बच्चे जो है वो जो ऐसा सोच रही है कि ये बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं आज क्लास में, क्यों वो डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, सही पॉइंट पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं. तो उसको दो रीजन समझ में आए. एक रीजन ये हो सकता है कि बच्चे जो हैं उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही ना हो, ये केस पढ़ा ही ना हो, क्योंकि वो आज जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आज उनका मिड टर्म का टेस्ट है. और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो अपने फ्रेशर्स की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, और उस फंक्शन की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर फोलीज कमिंग अप इन सेवरल वीक्स, जो अभी कुछ टाइम में आने वाला है फंक्शन, उसकी तैयारी कर रहे हो. इसलिए शायद वो रात को इस केस को पढ़ ना पाए हो, और शायद ये रीजन हो सकता है कि उनका क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा. तो ये रीजन रहा. नेक्स्ट पैराग्राफ, डॉक्टर आनंद चौधरी. मिस्टर आनंद चौधरी. Excuse me, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Excuse me, sir. Yeah. I am Dr. Shaumita. I was supposed to go for paragraph 5, 5th paragraph. अच्छा, तो आपने और ये मिस्टर आनंद ने कौन सा पैराग्राफ किया है? थोड़ा सा ये एक जन बीच में. Sir, I have done 5th paragraph, sir. और इन्होंने आनंद चौधरी जी ने कौन सा किया है? सर मैंने एक्चुअली 4th किया था, बट मैम वाज लाइक कि मैम हु टॉक्ड अर्लियर वाज क्लेमिंग. चलिए अब आप 5th की बात करते हैं. आपसे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. मैम कंटिन्यू करें सर. अभी क्या है, जो हमारा 2 घंटे का सेशन है, कोई भी पार्टिसिपेंट छूटेगा नहीं. ये जो मैंने नाम लिखे हैं, 8 लोगों का नाम लिखे हैं, ये वाला जो पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये लोग बिल्कुल चुप हो जाएंगे.
और उसके बाद मैं एक एक करके बाकी लोगों से बातचीत करूंगा, उनसे पूछूंगा, छूटेगा कोई भी नहीं। और जो आंसर नहीं देगा उसका सर्टिफिकेट के लिए मैं I'll give recommendation to stop their certificate because they have not participated in the class. चलिए, Somita ji, we are excited to hear you. Please Yes, carry on. sir. Yeah. Actually, sir, paragraph 5, it talks about Joe's regret of not finding time to meet Sue Godfrey, the student representative, in the last 2 weeks because of a tight schedule. In fact, Sue has requested her for an online meeting via Microsoft Outlook, but she couldn't match his calendar and due to her teaching group meetings as well as her administrative duties, conference calls about her administrative quarterly journals. बहुत अच्छा मैम। तो इसमें क्या हुआ कि आनंद जी, आपने भी यही पैराग्राफ प्रिपेयर किया था कि इससे पहला किया था? सर मेरा इससे पहला 4th था, बट अर्लियर मैम वाज क्लेमिंग लाइक कि शी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट इज व्हाई आई वाज नॉट। समझ गया, कोई बात नहीं। इसमें क्या है कि ये हम सबके साथ होता है। ये जो इसमें 5th पैराग्राफ में सोमिता मैडम ने ये जो बताया है, इट हैपेंस टू एवरी वन ऑफ अस बिकॉज टीचर्स आर नाउ एंगेज्ड इन सो मेनी जॉब्स। इसमें क्या हुआ, जो ने क्या, देयर आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, यू सी हाउ इट हैपेंस इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, that whatever is happening in the class, we are getting an official or unofficial information from the class representative. तो अब आप देखिए how important is talking to a class representative. And Jo, assistant professor Jo, she was regretting that why didn't she get a time to talk to the class representative Sue, because if she would have interacted with her, she would have been able to know the real reasons that why students are not interested in her class. And the reasons for her non-interaction with Sue was that she was an editor of one of the administrative journal, which was coming quarterly. Am I audible now? Yes, sir. Yeah, sorry again, it got disconnected because whenever there is a power change, the internet is actually stopping. Okay, never mind. So she was editor of one of the journal which is coming on the quarterly basis, means 4 issues are coming, and she was busy with that and she couldn't talk to the class representative Sue Godfrey. And now she is realizing her mistake, that if she would have discussed with her, then she would have come to know about the real reason of students' non-participation in the class. Right? Okay, let's move to next paragraph. Dr. Tanuja Yadav. Dr. Tanuja? Hello? Dr. Tanuja, are you there? Dr. Tanuja, am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर तनुजा, आपका नाम लिखा है इसमें, डॉक्टर तनुजा यादव। मैम ये है नहीं क्या डॉक्टर तनुजा यादव? Just check. Can you just call her? So she's there. Dr. Tanuja, ma'am, can you speak up? Because mics are on unmute mode only.
So she's very well there. I think she cannot, she might. Dr. Tanuja, are you there? Dr. Tanuja, can you speak up, ma'am? Yes, sir, she can speak. Ma'am, can you speak now, Ji? Maybe, sir, she's also mistaken, just like me. Like what? So mine paragraph was fourth now, so I did with the third one. So she did with which paragraph? I don't know. Dr. Tanuja, are you there? Can you speak on? I think she's trying to speak, but somehow there may be some connectivity issue or something. Ma'am, can you hear us? She's trying to speak, sir. Okay. In the meantime, if there is any volunteer for this paragraph. Any volunteer for this paragraph? Okay. So what happened in this, that there were several students in section D besides Tom who have a lot of experience about the assembly line, and they have worked during their vacations and all that, and with a varied kind of experience. But problem is that she couldn't get out of the real potential of the students, and exactly what she was trying to bring in the class, the knowledge about plant layout, that point was not really coming out. And what was her problem? That जो हमारा जैसे problem होता है कि sometimes our specialization is different and we are sent into a different class, or some other subject is given to us. So her background was actually of sales, right? And she was asked to teach operations, and these students were knowing. तो जो को लगता है कि जब स्टूडेंट्स को ये बात पता है, तो हो सकता है वो उनके माइंड में ये इंप्रेशन हो कि ये सही से पढ़ाई नहीं पा रही है. क्यों नहीं पढ़ा पा रही? Because her background is not operations. Her background is sales. And ये बात उसको काफी परेशान कर रही थी कि टॉम स्टेबन्स जो है वो क्लास डिस्कशन के अंदर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड मतलब he didn't talk about the plant layout and discussed about other things, productivity and profit and all that. So this was actually creating a pressure in her mind कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. डॉक्टर कुलवीर, आर यू देयर? नेक्स्ट पैराग्राफ आपको दिया है डॉक्टर कुलवीर. मैम डॉक्टर कुलवीर हैं यहां पर? Sir, Tanuja ma'am has said that she was not able to speak, and there's again Kulveer sir is also saying that he is also having some sound problem. I think we all will be having this problem, sir. अभी इसीलिए ऑफलाइन ऑनलाइन में यही फर्क होता है right, कि अगर अभी ये ऑफलाइन क्लास होती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम होने का बहाना ही नहीं मिलता. Exactly, sir. चलिए, कोई वॉलंटियर है इसका नेक्स्ट पैराग्राफ का, पैराग्राफ 7 का? यस सर, आई विल ट्राई. कौन है, क्या नाम है? रवि मिश्रा सर. हाँ रवि जी बताइए प्लीज. After all this, actually, Professor Joe, what she wants that student must analytically resolve the case and do mathematical part of and logical part of that case, but the students are not doing that. So she is having questions in her mind, and she is thinking of all what is can be done and what
has to be done for what the student has to be done for this case, or they might have done for this case, are not doing so. So the case is having two exhibits, Exhibit 1 and Exhibit 2, and they have to be multiplied to get the observation of how much difference is there in workflow assembly line. If they have to analyze that data, and that data analysis is not going in the minds of among students. So she is thinking of that. Very correct, very correct. इसमें क्या है कि ये जो मटेरियल जो ने स्टूडेंट्स को दिया था, उसके साथ उसके कुछ 2 एग्जिबिट्स भी थे, 2 अटैचमेंट्स थे उसमें, और होना क्या था कि उन 2 अटैचमेंट्स में जो डेटा दिया था उसको मल्टीप्लाई करके और एक टाइम निकलना था, कुछ फिगर निकलनी थी, एंड दैट वाज द रियल आंसर. बट वहां तक जो है, she couldn't ask or she couldn't lead the class to that extent that she could ask students कि भैया आपको एग्जिबिट्स दिए हैं, आप एग्जिबिट्स को देखो, एग्जिबिट्स में ये फिगर्स दिए हैं, एंड यू शुड मल्टीप्लाई दैट एंड यू विल गेट द आंसर. और उससे ऑप्टिमाइज यू विल गेट द आंसर दैट हाउ वर्कफ्लो कैन बी ऑप्टिमाइज्ड. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम when you give some material to the students and you have to guide the students that how to use that particular material, but in that particular specific time there is, I'll show you one slide. ये देखिए, अभी मैं उस पार्ट पर आता हूं. Can you see my slide now? New slide? Yes, sir. Now this is how you will do a time management, and we call it as choreographing a class. Choreographing a class means, suppose you have for 5 to 10 minutes, you have to talk about the background, and then you have to, in next 20-30 minutes, you have to describe about the essential features, and then you have to talk about the theory about the concept or the theory. You have to discuss about the theory or the concept, or you need to people know about the theory behind it. जैसे आप कोई practical चीज पढ़ाते हैं तो कोई theory भी पढ़ाएंगे उसकी. Then you have to, for next minute, you have to compare and contrast the arguments. Suppose you can conduct a quiz, or you can ask 4 people, okay, how many people do you agree with this answer? How many people you will agree with this answer? So like that, you have to generate that kind of discussion. And then in next few minutes, you will also talk about correlating qualitative and quantitative analysis. And then in last 5 to 10 minutes, you have to conclude your talk. So this is how you will organize your discussion in the class if it's a 1-hour class. Or even it can be a 2-hour class. Depends upon that. जैसे normally when my classes are scheduled, so normally other teachers, they take 1-hour class, but I request whosoever is designing the timetable that I need a 2-hour class, because I need proper discussion in the class. Even if it's a numerical class, I normally teach quantitative techniques, then operations research, or operations management, in which there is a question and you need a proper explanation, and doing that question and explaining to the students each and every step. And once this gap is there, in the next class, you have to start it again. So instead of breaking into 2 classes, my preference is that I go in one session, complete one question, do at least one question. If one question is completely clear and understood by all the students, then I get in confidence that I can go to the next question or the next concept. So it depends upon teacher to teacher. You can vary the time, but this is how you will choreograph your whole class. Depending upon you have to tell the background, essential features, theory, then contrast and compare the arguments also, and then
relate the quantitative and the qualitative thing, and then finally you have to conclude. This is what my suggestion is. So coming back to the last paragraph now. Okay, so who is going to talk about the last paragraph? Last paragraph, Dr. Vibhuti, are you there? Vibhuti, Dr. Vibhuti, are you there? Last paragraph, ma'am. Dr. Vibhuti. Ma'am, I think you have many dummy professors attending this she's program. there. Vibhuti ma'am, can you speak up? Dr. Vibhuti ma'am, can you unmute yourself and speak up? She's there, so. Please. Ma'am, we are pleased to hear you. Please come up. Dr. Vibhuti. डॉक्टर विभूति, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम विभूति, और कोई वॉलंटियर करेगा लास्ट पैराग्राफ के लिए? यस सर, आई कैन। सर, कविता मैम इज रेडी। हाँ कविता जी, आप बताइए। चलिए, सारे आंसर आप ही दे देंगे। Sir, actually, in the last paragraph, Jo had certain things into her mind, how to ask the questions to my class and how to come to the conclusion part of this case. But when she saw that Alice was there, but he was not interested to help her out. He was engaged in some other activities, and then she thought of Miko. He was a new, I think so, notorious student, I think so, but because he always tried to disturb the class and raise his hand or her hand always, but never try to give the answer to the question. One thought comes into her mind was she herself can solve the data, whatever is in the exhibit 1 and exhibit 2, and give the answer to the students. It was a kind of a challenging job for her, what to do and how to move further. यही चैलेंज मेरे सामने भी आ रहा है मैडम, बहुत अच्छा कहा आपने। सेशन में ये चैलेंज कि ये पैराग्राफ कोई पार्टिसिपेंट बोलेगा या मुझे ही बोलना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज द चैलेंज आई एम ऑल्सो फेसिंग, एंड समटाइम्स मोस्ट ऑफ यू मे फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंज, दैट हाउ टू create interest in the students and go ahead with the class. Wonderful, ma'am. Thank you, ma'am, for such a wonderful celebration. अच्छा, ये जो अब जो हमारे 7-8 लोग थे, अब ये बिल्कुल चुप हो जाएंगे, ठीक है? अब हमने क्या करना है? अभी तक हमने सिर्फ ये मेरे को इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ लोग केस को नहीं समझ पाए या डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं या उनको टाइम नहीं मिला। जो भी करा हमने ये एक्सरसाइज, अभी तक मेरी क्लास एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब हमें करना ये है पार्टिसिपेंट्स में से कि अब हमें रोल अदा करने हैं। रोल कैसे, मतलब इसमें 2 तरह के रोल हैं। जो अब बोलेगा, अब मैं यहाँ पर टीचर नहीं रहूंगा, अब एक नया टीचर हम यहाँ क्रिएट करेंगे इस क्लास में। मतलब क्रिएट का मतलब ये है कि उसको एक टीचर, 2 तरह के हैट हैं यहाँ पर, 2 तरह की टोपियां हैं। एक टीचर की टोपी है और एक टोपी है स्टूडेंट की। तो ओके, ये तो किसी के कमेंट्स वैसे ही आए, वीर सिंह राण, ठीक है। तो अभी मैं कहूंगा कि आपको टीचर की टोपी पहननी है। आप जो नहीं है, मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि यहां पर सिर्फ एक टीचर अब हम असाइन करेंगे और हम सब बाकी लोग जो हैं, वी विल बी द स्टूडेंट्स, ठीक है? तो अब ये जो, जैसे मैंने ये क्लास को चलाया है, ये डिस्कशन मैंने किया है आप लोगों के साथ, अब आप लोगों को किसी एक टीचर को, जिसको मैं कहूंगा, और फिर बारी बारी से हम सबको बुलाएंगे, विल कॉल वन बाय वन। You have to ask a question from all of us and you have to initiate the discussion here. कौन करेगा? Are you getting my point? I am inviting you, any one of you,
to be the teacher here now in this class, what I am conducting now. Now I'll not be the teacher. You will be at my place and you have to run this class. You have to run this show. Who is ready for this? Who is ready for this? We have one participant named as Betty Sibyl. Betty, are you there? Miss Betty, are you there? Miss Betty, you have to run this class as a professor now. Another part, can we invite another participant? Dr. Nayan Kumar C. Ratnakar. Dr. Ratnakar. Ratnakar Saab, are you there? Anybody who voluntarily wants to ask the question? Sir. Yeah, please. Yeah. Question तो मेरा मैं as a teacher. डॉक्टर सूद आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम डॉक्टर सौरभ. Yes sir, might be some network issue sir. I'll just check. हमको एक पार्टिसिपेंट मिला था, वो भी उनका टेक्निकल. Sir, there's some technical issue in Chandigarh, so he might be in Chandigarh itself, sir, because I know him personally. Okay. Anyone else? Roll up. Yeah, like what I am inviting you is any member that you have to be at my place now and run this show by asking a question. There are two types of questions. One is assignment question and one is discussion question. असाइनमेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके आंसर्स टेक्स्ट में राइटली गिवन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिया था एक असाइनमेंट एंड ऑल द आंसर्स वर गिवन इन द टेक्स्ट. डिस्कशन क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर्स दे आर नॉट गिवन इन द टेक्स्ट. there are no direct answers to the questions, and such questions are known as discussion questions. So what you have to do is you have to design a discussion question, and that should be the opening question, and the opening question should be such that it should lead to the discussion. जो के साथ क्या हुआ, जो ने क्या किया था, हैं? So can I start? कौन बोल रही है मैम? Sir, Kavita again. I'm on my way to home, but still I can take this initiative. अच्छा, नहीं अभी आप ड्राइव तो नहीं कर रही हैं? सर मैं वॉकिंग करके जा रही हूँ घर पे अपने, बट आई कैन आस्क द क्वेश्चन, ओपनिंग क्वेश्चन सर. ओके, you can answer the opening question. और भी कोई है यहाँ पर? I can ask. Ravi, you want to ask a question? Yeah sir. As a teacher. Discussion question है. अच्छा, as a teacher, discussion question start करना चाहते हैं. Yes sir. तो ठीक है, एक मिनट रुकिए आप, अभी आपसे पूछते हैं. तो दो तरह के क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, एक आपका डिस्कशन क्वेश्चन हो गया, असाइनमेंट क्वेश्चन हो गया, लेकिन डिस्कशन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपनिंग क्वेश्चन. जो के साथ क्या हुआ, जो ने जब ओपनिंग क्वेश्चन पूछा तो ब्रैड लैंकेस्टर जो था उसने उसको आंसर किया एंड ही वेस्टेड 7 to 8 minutes of the class, and what was the purpose actually failed. So the opening question should be such that it should lead to the discussion and it should not waste the time of the class. चलिए कविता मैम से सुनते हैं ओपनिंग क्वेश्चन क्या है. औरों को भी मौका मिलेगा. ओपनिंग क्वेश्चन 4 या 5 लोगों से हम पूछ सकते हैं, सबका ओपनिंग क्वेश्चन अलग होता है. कविता मैम प्लीज. Okay, there is a company, LMP company, and it is facing the problem of layout, and lot of time is being wasted. So this is the data. आप अपना वो भी ऑन कर सकती हैं क्या, क्या कहते हैं, कैमरा? Sir, I am on the way right now. हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा. हाँ आप बताइए, अब आप टीचर हैं इस क्लास में. Okay.
Hello everyone, myself new teacher of operations management, and I have a case in front of you that this is an LMP company and we are facing a problem of layout redesigning. So a lot of time is being wasted from shifting from one department to another. Here is the data provided to you people. Kindly come up with your ideas as how to minimize all of them. The cost of shifting from one place to another. Kavita ma'am, isme you are not actually the Joe now. My request is that you become Pankaj Madan here now, and you have to run this class, the existing class. Not you. You need not to become the Joe. आपको यहाँ पर जो डिस्कशन है, ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको शो रन करना है, इनका शो रन करना है. इनसे आपके सामने जो मटेरियल आपके पास है वो इनके पास भी है, तो इनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि एक डिस्कशन इनिशिएट हो जाए. जी मैम. Okay, so my question to all of you is that as a head of some company, if we are facing the problem regarding some layout, so how to solve that problems to make the cost minimize with whatever data is provided. Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello. मैम आपकी आवाज ना बीच में थोड़ी कट गई थी, एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन. Okay, so my question to all of you is that as a teacher, if the problem comes to us of the time saving in the layout, something like that, whatever the case this is, हम लोग कैसे क्या steps लेंगे उनको minimize करने के लिए cost को. Hello. Sir, may I? हाँ, आप सब देखिए, कविता मैडम के अलावा, हाँ कविता मैडम के अलावा बाकी हम सभी लोग अब स्टूडेंट्स हैं. हमने स्टूडेंट्स हैट पहन रखी है और कविता मैडम टीचर हैं, तो जो भी कविता मैम के क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है वो दे दीजिए. Actually, Kavita madam is taking all the total case study, and she is summarizing and asking a question on total case, I believe. So according to me, if I will be the teacher of this case study, my first question must be, not a teacher of this course study, if I am going to teach this case study, my first question for discussion will be, should Assistant Professor Joe should preoccupied her mind before getting into the class? That will be my question. First question of discussion. Hello, sir. मदान सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. जी, और लोग भी बताइए. कविता मैडम ने जो आंसर पूछा है डिस्कशन में, तो एक ही जना बोल रहा है. खाली हम लोग इनको रवि मिश्रा जी को या इनको डॉक्टर नागनाथन को ही सुन पा रहे हैं, बाकी लोग बोलिए. Good morning, ma'am. The answer to your question, you asked that how can we reduce that material flow, the distance between them. Yes. So one thing that is possible is we can reconstruct or redesign the layout so that we can reduce the distance between the two places, in between which it's taking too much time for the material to reach one place to another place. That is my answer, ma'am. And answer to Ravi.
I'm sorry, Kavita ma'am, can you mute yourself? Kavita ma'am, can you mute yourself? हाँ बोले मैम. And coming to the answer for the question asked by the Ravi Mishra sir, sir, you said she has to be preoccupied. So preoccupied with what, sir? Like she has to be prepared for the class, or the expectations what she is going to get in the class, or like before going we have some expectations like I'll get this answer, I'll do this in the class. But when it doesn't happen in the class, so automatically everything which we planned, they go as a waste. So exactly what preoccupation you are asking about, sir? That's it. That's it. I was talking about the same thing, that she is preoccupied, and she has already having an image of that class. So one teacher must do these things, or he may not do these things, getting into the class and while giving lectures. Okay, sir. Okay. Let me ask one question to all of you. Why Joe is in problem? Am I audible, sir? Why? Yes. Yes. Good afternoon, sir. Myself, Monica Tuggal. Yeah, Miss Monica. Yes. Yeah, sir. Actually, Joe was not from the same field to the subject that she was going to teach. So basically, maybe she was in a confusion or in a fix whether she will be able to do justice with that subject or not. So she was preoccupied with this kind of thoughts also. She is thinking too much, and rather than doing practical things, she is thinking much more than that, I believe. I think She is more analytical, and as Ravi Mishra sir said, she is thinking too much. She is making pre-opinions, like this may happen, whether I should do this or that. Instead of getting into or reaching into a conclusion at a time, she is more analytical in a class, and in this analysis, she is actually missing out how she has actually to take care of the class. Any other response? Yeah. Any other response from any other participant? Yeah. Yes, like Very today good. you asked me 2 or 3 times whether I had given the case study to the participants or not. In the same case, Joe hasn't confirmed whether the case study has been given to the students priorly or not, and they didn't come up prepared with the answers to the question as to how to solve that, sir. Okay. Should Joe, what do you think, that should Joe direct the class or cold call a student? Means actually what she was doing, she was just doing a cold calling. Cold calling means, okay, you stand up, you tell about this, or she invited different people whom actually she was not aware about their background, and even she was aware about their background, she was not knowing that whether that person has prepared for this case or not. So instead of that, knowing that background of their preparation about that particular case, she was just having an image in her mind about that particular student, that he was working executive, this, that, and she was cold calling and asking the student to participate in the discussion, and discussion actually drifted into some another direction. So what is the alternative for that? What is the alternative now? What she can do? So one method or one suggestion is she can ask all the students to sit together and discuss and present it as a team. That one thing can be happened. She can ask students to present as a team. As a team, sir. They can discuss between them. They can come up with the solutions and as a team they can present it. If they don't want to present. Means you want that she should divide the student into different groups and let them first discuss within them, and then they should come up with the answer. Yes, sir. Yes, sir.
So was she having such time that she can do that? Anyhow, if she is going to wait, no one is going to answer, no one is going to get up. If she is going to cold call also, she don't know whether they have prepared or not. So instead of wasting the whole hour, she can give them 5 minutes to prepare, and then she can start the presentation. Okay. Do you all agree with ma'am Jhansi? Is it your right name, ma'am? Yes, sir. Jhansi. Okay. So do you all agree with ma'am Jhansi? Or do you have a different opinion? Ravi Mishra ji, do you agree with Jhansi ma'am, what she's saying? She's saying that she should divide the students into groups and then like that. That strategy needs time, and actually she has already passed out of half of the period. So she, if she goes for this strategy, she might need another class or a next day for this strategy. And in my opinion, she can start a brainstorming session on this case study, as she has already given half of the period to study the case to the students. That's my opinion. Okay. What is the role? What do you think is the role of a blackboard in a class? Yes. Should the blackboard be used in this kind of methodology of discussion or not? In brainstorming session, we use Blackboard for jotting down the opinions of different students. Very nice. Yeah. Then we can also come to the conclusion after having all the students get participated in this brainstorming session. We can use that Blackboard and write each and every student's. Very nice, Ravi Mishra ji, very nice. I think you should get an A grade in my class at least. Very correct answer, very true answer. And Blackboard management is again another very, very important topic. And usually, like, we have one blackboard in our class or two blackboards in our class, but most of the foreign universities, they are having 6 blackboards in the class. And let me share with you that it is essential for teachers to fill all the blackboards in all the classes, whatever type of lecture it is, but it is mandatory that for effective teaching, you should write on the blackboard. Although they don't use chalk, they use a different kind of material for that. But writing on blackboard is essential, and especially you can start with how Ravi Mishra ji has suggested that you should write about which participant had spoken about which means their comments, noting down their comments. And also they are sliding blackboard. So you can, once you are pointing out to someone, like I would point out to what Dr. Naganathan has said, or what Dr. Kulveer has said, or what Dr. Miss Sumita has, Dr. Sumita has talked in this session. So blackboards can slide, and you can also point out, okay, Sumita, you said like this, and then Ravi said like this, and this is the final conclusion. Why don't you, your viewpoints were different, and this is how you can interrelate the different participants within a discussion. So Ravi Mishra ji, your answer is very, very correct. We have 2 types of discussion. One is can be instructor directed, and another is student directed. So how many of you say that the discussion should be instructor directed, means the teacher directed? And how many of you say it should be student directed? Ma'am, इनके माइक्स खोल दीजिए जरा. I believe in student directed, sir. Okay. और बाकी लोग बोलिए. 77 लोग हैं, सिर्फ 7 लोग ही बोल रहे हैं. Sir, it should be student directed. स्टूडेंट डायरेक्टेड. अच्छा, और बताइए. लेकिन स्टूडेंट डायरेक्टेड का हाल तो आपने देख लिया जो कि क्लास का. क्या बोलेंगे? सर, it should be I think so blend of both होना चाहिए, not a single direction. ये कौन बोल रहा है मैम? सर, कविता. ओके. तो एक ब्लेंडेड होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए उसमें. मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन इंस्ट्रक्टर डायरेक्टेड एंड स्टूडेंट डायरेक्टेड. अगर स्टूडेंट डायरेक्टेड में डायरेक्शन लेस हो रहा है
और जैसे कि जो की क्लास में हुआ, एक अलग डायरेक्शन में क्लास जा रही है, टाइम खत्म हो रहा है, क्लास खत्म हो रही है, और लेकिन जो रियल इंडक्शन ऑफ टॉपिक है वो नहीं हो पा रहा है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एग्जैक्ट टॉपिक पे नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको यू शुड वॉक द टॉक, और इंस्ट्रक्टर को अपने हाथ में कमांड लेनी पड़ेगी, और उसमें जैसे उसको जो को बोलना चाहिए था कि भाई 2 एग्जिबिट्स को आप देखो, इसको कंपेयर करो, इसको मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ। दिस इज द राइट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्लो या टाइम। तो इस ग्रुप में हमारे साथ हैं जी वैथनाथन, जी वैथनाथन, आर यू देयर? जी वैथनाथन, आर यू देयर? गरिमा मलिक मैडम, आर यू देयर? गरिमा मलिक, हरप्रीत कौर, हरप्रीत मैडम, आर यू देयर? यस सर। हाँ, जरा बताइए मैम, क्या आप क्या सोचते हैं कि स्टूडेंट डायरेक्टेड होना चाहिए कि इंस्ट्रक्टर डायरेक्टेड होना चाहिए क्लास को, और बैलेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बताइए मैम, बोलिए मैडम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, और बोलिए राहुल देसाई, प्रणव कुमार। सर हेलो, सर आनंद देसाई, बोलिए। आनंद सर, what I feel it should be topic directive, like whatever topic or whatever subject we need to cover into the class, it has to be directive to that, and to achieve that topic directive thing, we have to blend our instructor's point of view whenever the instructor feel that topic is going out of the track. It should be topic directive, I feel. मैं बोलूं सर? Hello. Yes, sir. Hello, sir. Am I audible? Yes, please speak on. Yes. Yeah. Sir, I'm Anand. Sir, what I want to tell that it should be topic directive things, like whatever topic or content we need to cover through that particular class, and like instructor should have role of visionary or mentor, so that whenever instructor feels that topic is going vague, and he should take the command into his hand. So in short, it would be blended, and it has to be topic directive, rather to have either student directive or to have instructor directive. Yeah, Dr. Sood also want to say something. Yeah. Dr. Saurabh. Am I audible, sir? Yeah. मेरा सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग म्यूजिक है, म्यूजिक वोकल, शास्त्रीय संगीत सिखाना होता है। तो कभी कभी मैं ये फील करता हूँ कि जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने गया हूँ, हो सकता है कि आज बच्चों का मन नहीं हो सकता वो पढ़ने का। बेशक मैंने उनको फ्लिप क्लासरूम मेथड से उनको टॉपिक दे दिया है, मगर आज उनका पढ़ने का मूड ही नहीं है। तो मुझे ज़रूरी भी नहीं है कि मैं वो टॉपिक आज डिस्कस करूं। मैं किसी और टॉपिक पे शिफ्ट कर सकता हूं। और मेरा अपना अनुभव ये है कि हर समय बच्चे को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उसको अभी समझ आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ऑल द टाइम्स। एक क्लासरूम एक लेबोरेटरी है जहां आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरा क्लासरूम तो ये है। हर एक की अपनी साइकोलॉजिकल इमोशनल अप्रोच किसी भी सब्जेक्ट के लिए है। वी आर नॉट मशीन्स। अभी हमने डॉक्टर सूद बहुत अच्छा बोला आपने। आई थिंक आई अप्रिशिएट दैट। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जैसे बहुत कम म्यूजिक टीचर से हमारा इंटरेक्शन हो पाता है, सो इट्स अवर प्रिविलेज कि आज आप हमारे बीच में हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे ऐसी कौन सी पेडागोजी म्यूजिक की बहुत स्पेशल है, टीचिंग पेडागोजी या लर्निंग पेडागोजी, जो बाकी स्ट्रीम्स वाले यूज कर सकते हैं? क्योंकि म्यूजिक अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन है और हम सब जानते हैं कि म्यूजिक से बहुत सारी बीमारियां भी क्योर हो जाती हैं, आदमी को बहुत आराम भी मिलता है।
तो क्लास के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो म्यूजिक टीचिंग से हम सीख सकते हैं? देखिए, मैं इस अपने आपके इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा बाद में बताऊंगा। सबसे पहला मैं आपको एक बात डिस्कस करना चाहता हूं, क्या हम जो काम कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, क्या हम अपने शौक से अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं? क्या हम अपने शौक से अपने जीवन को लीड कर रहे हैं? जब मैं शौक से ही अपने जीवन को लीड नहीं कर रहा हूं, तो चाहे मैं म्यूजिक पढ़ाऊं, चाहे कॉमर्स पढ़ाऊं, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ाऊं, जो भी, तो एक बात तो रही ये कि क्या हम अपने जीवन को शौक से जी रहे हैं? शौक से जी रहे हैं तो हम हर सब्जेक्ट में अलग अलग वेज, अलग अलग तरीके अपने आप ही आते जाएंगे। अच्छा, आज मैं ये बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको, मैं कल देखूंगा इस टॉपिक को। क्लासरूम टीचिंग में आप अपने बच्चों को समझाना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ को मैनेज करना, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सारे फैक्टर्स में। हाँ, म्यूजिक हमें हमारी एजुकेशन, और हम सभी म्यूजिक को पसंद करते हैं। मैं आप सभी एक अच्छा म्यूजिक सुनकर जाएं। हम कहीं सैर करने जाते हैं, लेक पर भी जाते हैं, तो हर तरफ एजुकेशन है। पार्क में सैर करने जा रहे हैं, अच्छा म्यूजिक बज रहा है, तो सैर करने का मजा अपना है। क्लासरूम में वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को मैनेज किया जाए, अपने इंटरेस्ट से अपनी लाइफ को लीड किया जाए। अगर अपने आप ही शौक से हम अपनी पढ़ाई नहीं की और हम किसी रॉन्ग जॉब में फंसे हुए हैं, तो कोई भी क्लासरूम हो, हम वहां पर प्रॉब्लमेटिक ही हैं हर वे में। ये ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, बट ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया। और अब जैसे कोई अब टीचिंग प्रोफेशन में आ ही गया है, यस सर, तो अब वो जॉब एग्जिट भी नहीं करना चाहता, और लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कुछ सजेशन, एक सजेशन कोई म्यूजिक टीचिंग की तरफ से, एक सजेशन कि हर रोज वो वो अपने हम घर में इम्प्लीमेंट करें? बैठकर, हर रोज सर? अपने घर में बैठकर योगा प्रैक्टिस करे, एक्सरसाइज करे, अपने लाइफ के जो काम उसके रहते हैं, अपने शौक, अपनी पढ़ाई के अलावा उन शौक, अपने इंटरेस्ट के लिए अपने लाइफ में टाइम निकाले। लेडीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेडीज, उनको अपना घर, बच्चे पूरा संभालना होता है। जो बेचारी अपने लिए टाइम नहीं दे पा रही है, अपने घर में व्यस्त है, खाना बना रही है, पूरा घर संभाल रही है, वो क्लासरूम में आकर भी इफेक्टिव टीचिंग की तरफ अगर ध्यान देना चाहती है, तो वो तभी दे पाएगी, वो अपने लिए टाइम निकाले, अपने इस सारे में से मैं क्या कहूँ उसको, पूरे शेड्यूल में से। तो कहीं ना कहीं जाकर सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ, सेल्फ अपने मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे आज दोबारा क्लास में जाना पड़ रहा है। बाकी म्यूजिक तो हम अपनी 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 तरह से सब सीखते हैं। हाँ, जब हम क्लासरूम में जा रहे हैं तो एक कुछ 2 मिनट का बच्चों को कोई एक मौन साइलेंस। एम आई ऑडिबल सर? यस यस, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ सर? हाँ जी, हाँ जी, मेरे आंसर को। हेलो, 2 मिनट का मौन रखें क्लास शुरू होने से पहले, और फिर अपना जो भी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग है, उसका जो भी आपने मेथोडोलॉजी जो आपने सोच रखी है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। यही मैं कहना चाहता हूं। हेलो, एम आई ऑडिबल? सर आपकी आवाज आ रही, पर प्रोफेसर सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, देखिए, जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे अभी ये जो केस डिस्कस किया गया, ये कमर्स का, अच्छे सजेशन अच्छे हैं सर आपके। हाँ, और मुझे वो टर्मिनोलॉजी या वो स्टोरी थी, वो पढ़ने में टाइम लगा, समझने में टाइम लगा। अच्छा, ये केस है, तो मेरा ये भी सवाल है कि उस केस में कहाँ मैं जो हूँ और कहाँ मैं वो स्टूडेंट हूँ, मैं मेरे क्लासरूम में कहाँ उसको फिट इस कहानी को करता हूँ।
इट इज नॉट पॉसिबल। आज की डेट में जो आपने केस स्टडी दी है, मैं आपकी क्लासरूम का वो स्टूडेंट हो सकता हूँ, मुझे आपकी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर सौरभ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अगर और कोई ऐड करना चाहता है मेरी बात में, मुझे करेक्ट करना प्लीज, चाहता है, अगर कोई डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, डॉक्टर सूद ने, उससे कोई डिसएग्री करता है, एग्री करता है, डॉक्टर राखी कुछ बोलना चाहती हैं? राखी जी। I would just endorse the point of view of Dr. Saurabh. He's my colleague, and I know he's such a fine person. And मैं यही you have to actually ना understand. मैं एक शेयर से ही बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ कि ये जिंदगी को देखने का ना एक नजरिया होना चाहिए। वो वैसी ही नजर आती, जैसा चश्मा पहन ले वैसी जिंदगी नजर आ जाएगी, है ना। तो जिंदगी का पैगाम लेके आता है, जिंदगी का पैगाम लेके आता है, रूह की महफिलें सजाता है, तुम्हें फुर्सत नहीं है सुनने की, वरना हर लम्हा गीत गाता है। सो दैट शुड बी द स्पिरिट। ऑब्जर्वेशनलिस्ट, आप एक नजरे खोलिए आसपास, आपको देखेगा कि आपके आसपास जो संगीत है वो तो कण कण में है। ईश्वर भगवान हर कण में समाया है, रमाया है। आपको बस एक नजर चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, लोगों की नजर का इलाज नहीं, नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। हाँ, तो परसेप्शन एंड एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चों को अपने बच्चों की नजर से देखते हैं तो आप ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे आप शाम को चाहे जितना मर्जी थके हो, खाना भी खिलाया, बनाया, सब कराया, और एक माँ का रोल आप प्ले करते हो कि नहीं बेटा मैं जितनी थकी हूँ मैं तेरे को होमवर्क कराऊंगी ही। तो आज आप स्टूडेंट को भी ऐसा ही लीजिए, है ना। तो कम्युनिकेशन सर ने बोला ना, अगर वो कुव्वते वो है ना आपके बोलने के अंदर वो हुक कर सकते हैं आप, तो आपका बच्चा कहीं इधर उधर बाहर देखेगा ही नहीं, है ना। वो एबिलिटी हो, चाहे चौक एंड हाँ, अब बहुत अच्छा बोला मैडम। अब डॉक्टर सुगंधा को सुन लेते हैं। No sir, just a single point that रहे थे आपका। I also want to say that if you can draw the attention of the student, then you have delivered your lecture. You have completely figured out that whatever the content they have absorbed or not, that's the main point, right? So if delivery is over, when a student's CSA is there, you have drawn their attention towards ourselves. That's it. I know Rakhi ma'am from long time back. Nice to see you ma'am, and attend this FDP. Thank you so much sir. चलिए अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं डिस्कशन को। ओवरऑल मैं डॉक्टर सूद की बात से सहमत हूं, और उसमें जैसे उन्होंने कहा कि जो आपके पर्सनल एम्बिशंस हैं या कुछ ख्वाहिशें हैं या आपकी कुछ एंगेजमेंट्स हैं, उनको आप मेडिटेशन से या उनको पहले पूरा कर लीजिए। यू कम फुल्ली डेडिकेटेड इन द क्लास एंड देन यू गेट एंगेज्ड विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास, उनकी बैकग्राउंड जानते हुए, उनको असाइनमेंट्स देते हुए, कुछ प्री असाइनमेंट्स आपने दिए हैं और उसको फॉलो अप करते हुए, तो एक जैसा एंगेजमेंट आपका घर में है, जैसे राखी मैडम ने कहा, उसी डेडिकेशन से वही एंगेजमेंट का लेवल अगर आप क्लास में रखते हैं तो काफी, डॉक्टर सुगंधा ने भी इसको इस बात को एंडोर्स किया कि तब आप उसको थोड़ा ज्यादा अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो ने सिचुएशन फेस करी है उसको काफी हद तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 72 या 77 में 71 लोग हैं। 71 लोगों में से, राखी जी अभी सुनता हूं आपकी बात, अभी बात करते हैं आपसे। 71 लोगों में से टोटल 15 to 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो काफी अच्छा नंबर है ऑनलाइन में एटलीस्ट। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि ऑर्गेनाइजर्स को कि आप इनको पार्टिसिपेंट्स को कहें कि और जो आगे सेशंस हों उसमें वॉलंटरीली अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फिर तभी ये एफडीपी इफेक्टिव होगी। अदरवाइज तो फिर खाली सुनना ही सुनना है तो फिर हम आपको नहीं सुन पाएंगे। और एफडीपी में क्या है कि पीयर टू पीयर लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज राखी जी की, सूद साहब की, और ये रवि मिश्रा, डॉक्टर जसमीत, नागनाथन, सुमिता, तनुजा, और इतने लोगों को हमने सुना। देखिए, तो ये एक लर्निंग जो है हमारी कंबाइंड लर्निंग, और तभी हम किसी बात को कंक्लूड कर पाएंगे। एक नई पेडागोजी को मैंने आज इंट्रोड्यूस किया है, केस मेथोलॉजी को। कई लोगों को आती भी होगी, लेकिन जो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने आज पीपीटी नहीं यूज करी, उसके लिए मैं 1-2 दिन की कंप्लीट वर्कशॉप करता हूं।
डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो उसको करेंगे डिटेल में उसको। इसके बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत अच्छा इंटरेक्शन आज आपका रहा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस सेशन। राखी जी कुछ कहना चाहती हैं तो लास्ट में उनसे बात सुन लेते हैं और फिर शो को एंड करेंगे। I was just overwhelmed. मुझे लगता है बस ये है, छोटी सी एक बात है कि be available to your students all the time, you know, not only in class but even offline, online, कैसे भी मोड में रहें, लेकिन हर मोड पे अपने स्टूडेंट के साथ एक नाता बना के रखें। Stay connected with them, not just on Facebook or Instagram. That's very important, है ना, जुड़ाव बहुत, तभी तनाव कम। बिल्कुल, और इसी जुड़ाव के लिए मैंने कविता मैडम को काफी परेशान किया, उनको बोला कि आपने केसेस डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं किए, उन्होंने पढ़े नहीं पढ़े। मैं मैडम से फॉलो अप करता रहा क्योंकि मेरा डायरेक्ट पार्टिसिपेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मैडम राखी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि आपका रेगुलर इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ होते रहना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए, वो पढ़ के आए हैं नहीं आए हैं, तभी हमारी टीचिंग इफेक्टिव होगी। सो थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वंडरफुल सेशन and making me interact with such a wonderful persons. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. It's my personal experience that I think we have enjoyed the session and it was great, and we are humbled to have you, sir, here. Before I go with the formal thank you note, I just want to make a short announcement that each and everyone, please turn on your video so that we can have a group photograph, which is very important. Please, all the participants, please, I request you all. Many of you have done, please, all of you do it. Still on very first page, I can see many of you have not done. Please, it's a big request because the certificates are on this. Totally on this. I mean, obviously the quiz and other things also matter, but this attendance is very important. I know you all know that. Please, I request you all. And then the post one. करने के लिए लालच देना पड़ रहा है। Exactly, ma'am. We have to do that. Still, I can see many of you are not turned on. Please, it's a request. Yeah. No, I can see so many of you. Please show me your beautiful faces. Yeah. Yes, ma'am is saying handsome too. Beautiful and handsome faces, Ji. Still not there, please. It's a request. It's okay. I'll take the other way, but thoda ja certificate liya, I think you will have to. I don't think so. Chalo, koi gal nahi. It's totally okay. Once again, thank you so much, sir. We are grateful for the time and the effort you took to share your thoughts and experience. And we are intrigued by your views. And sir, I would like to say that a million sincere thanks to you from the sea of wisdom and knowledge of your the knowledge you have showed us. And we enjoyed the session. And now I'll request all the participants that it's a lunch break. You all can have your lunch and we'll meet in the session 6 at 2:30. Thank you so much. Thank you all the participants. Offline mode, no? Otherwise we would have taken lunch together. Yes. That's true, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Rakhi, ma'am. So thank you, ma'am. My pleasure. I really wanted a shairi from your side in the session, ma'am, and you did.